हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स विद रविंदर कत्याल में। आज हम करेंगे फैक्टोरियल्स एंड एक्सरसाइज 5.2 इन एडवांस मैथ्स। सो व्हाट आर द फैक्टोरियल्स? देखिए, फैक्टोरियल्स क्या होते हैं कि जब हम नेचुरल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स वी आर टेकिंग। अब सपोज पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज टू फिक्स 4 बुक्स इन ए शेल्फ, how many arrangements can you make? So by fundamental principle of counting, we are having first book we can arrange, and we can arrange in how many ways? We can arrange in 4 ways we have done yesterday. And the second we can arrange in 3 ways. Third, we can arrange in 2 ways, and the last in 1 way. So total numbers were 4 into 3 total arrangements. These were the total arrangements are equal to total ways या arrangements आप कह सकते हैं 4 into 3 into 2, and this is 4 into 3 into 2 into 1. This is equal to 24 ways, right? When we are multiplying like this in the decreasing order, this can also be written as this is equal to 4 factorial. Means we are multiplying 4 into 3 into 2 into 1. We are taking the consecutive natural numbers in the decreasing order, right? देखिए, इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, लेकिन आंसर हमारे पास स्टेटमेंट में हमारे पास ऐसे आता है 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, तो हम पीछे को चलते हैं। अदरवाइज दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू multiplication of 7 natural numbers, first 7 natural numbers, right? So the product of first n natural numbers is called n factorial, and this is the way of writing it and denoted by n factorial. So the product of first n natural numbers is called n factorial and denoted by like this. This is denoted. So n factorial is equal to n, नेक्स्ट इससे पहले वाला नंबर क्या होगा n-1, उससे पहले वाला n-2, उससे पहले वाला n-3, और सब लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा. All these are the natural numbers and their product is known as n factorial. So for example, this is 3 factorial. What is 3 factorial? 3 factorial is, so what this will be 3 into 2 into 1. This is equal to 6, right? 6 is the answer. 5 factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. जो नंबर लिखना है हम उससे शुरू करके एक 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 माइनस करके लास्ट में 1 तक पहुंच जाएंगे, राइट? सो दिस इज 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, right? Now there are few results you must remember. This is देखिए 0 factorial is equal to 1. You can't say कि 0 factorial is equal to 0. This is 0 factorial is equal to 1. And why it is so? देखिए इसका भी लंबा प्रूफ है. 2 ways we can say. देखिए 1 मैं आपको अभी बता देती हूँ. For mathematical proof I will upload an short. You can see from there. देखिए when we are 0 factorial means we are not doing anything, and when we are not doing anything, that is also work. Suppose there is empty table, okay? So how many things are there, how many arrangements are there? Nothing. This is equal to 1, and 1 factor is also equal to 1. So, and also a factorial plus b factorial is not equal to a plus b factorial. Must keep in mind, and a factorial
minus b factorial is not equal to a minus b factorial. So next let us check it. Get the 3 factorial plus 4 factorial is equal to check whether 3 factorial plus 4 factorial is equal to 7 factorial. So let us see what is LHS. LHS is 3 factorial plus 4 factorial. This is equal to 3 into 2 into 1 plus 4 into 3 into 2 into 1. So this comes out to be 6 plus 24. This is equal to 30. Now RHS 7 factorial. This is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So up to here it is 120, 126 are 720, 727 are 5040. So 30 is not equal to 5040. LHS is not equal to RHS. Hence, it is false. Hence, it is false. Now, exercise 5.2, question number 1. HCF find is HCF and LCM of 6 factorial and 5 factorial. देखिए क्या होता है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है ना. अब HCF कॉमन फैक्टर का क्या मीनिंग है? जो सबसे बड़ा नंबर जो फर्स्ट टर्म को भी डिवाइड करे और सेकंड को भी करे. तो 5 फैक्टोरियल फर्स्ट टर्म का भी फैक्टर है, सेकंड का भी फैक्टर है, हमें दिख रहा है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और सेकंड टर्म हमारी 5 फैक्टोरियल ही है. जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल. सो HCF is equal to 5 factorial. This is the answer. And the second LCM. LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. देखिए जो दो हमें टर्म्स दी हुई हैं, अब जैसे अगर आपने 12 और 18 का आपने एलसीएम निकालना है तो क्या करते हो आप? 12 के मल्टीपल्स लिखते हो 12, 24, 36. 18 के मल्टीपल्स लिखते हो 18, 36. अब 36 दोनों में आ गया तो वो तुम्हारा आंसर है. ठीक है. अब देखिए आप इसमें आप इसके मल्टीपल्स क्या है? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और इसका 5 फैक्टोरियल. सो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. और you can say LCM is equal to into 5 factorial. Is it okay? Clear है आपको? Question number 2 is find n if n factorial upon n minus 3 factorial is equal to 60. So what is given? N into n minus 1 into n minus 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल. देखिए ये यहाँ तक मैंने क्यों रोका? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में एन माइनस 3 फैक्टोरियल दिख रहा है. सो अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60. अब फिर ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर हैविंग एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 60. Now we have to think of 3 consecutive numbers, natural numbers whose product is 60. देखिए या तो इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं बट दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, इवन 10th में भी नहीं है. सो आपको 3 हिट एंड ट्रायल्स ही सोचने हैं. पर उसका बेस्ट भी है कि अगर आप 60 के नो नीड टू डू दिस इफ यू आर एबल टू फाइंड द फैक्टर्स अदरवाइज. ठीक है. 60 अगर मैं इसका करूँ तो 2 30 आ जाएगा. 2 is 15, 3 5. देखिए एक तो 5 फैक्टर हो गया. अब ये मुझे 4 दिख रहा है. 5 इंटू 3 इंटू 4 जो कह लो 5 इंटू 4 इंटू 3
This is the answer. 3 factors are there. So this is equal to 5 into 4 into 3 into is equal to, sorry, this is right. So this implies 5 into 4 into 3 is equal to 60. So this implies ये 60 है आपका. So this implies n is equal to, what is n? n is equal to 5. क्यों? क्योंकि 5 में से 1 माइनस किया हमने 4 आ गया, उसमें से 1 माइनस किया हमने 2 आ गया, 3 आ गया. ये कह लो कि 5 में से हमने 2 माइनस किए तो 3 आ गया. सो n इज इक्वल टू 5 आंसर. थर्ड सम है आपका फाइंड x if 1 upon 5 factorial plus 1 upon 6 factorial is equal to x upon 7 factorial. So this implies 1 upon 5 factorial plus 1 upon 6 factorial is equal to x upon 7. देखिए बाकी रूल सारे आपके मैथ्स के वही हैं जो होते थे. So this implies 7 factorial into 1 upon 5 factorial plus 1 upon 6 factorial. So this is equal to x. So 7 factorial upon 5 factorial plus 7 factorial upon 6 factorial is equal to x. So this implies इस साइड कर देते हैं बाकी 7 into 6 into 5 factorial upon 5 factorial plus 7 factorial upon 6 factorial, sorry, 7 into, this is 7, क्योंकि 6 है ना नीचे तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा. 7 into 6 factorial upon 6 factorial is equal to x. So this is cancelled, this is cancelled. This implies 42 plus 7 is equal to x. So this implies x is equal to 49 answer, right? So next is find the values of x in each of the following. Here x is greater than or equal to 0. So x factorial is equal to 120. देखिए तो हम ऊपर भी कर चुके हैं. What is x factorial? X factorial 120 is equal to 5 factorial. We know that this is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 6 for the 24, 5 the 20. This implies x is equal to, what is x? Is equal to 5. This is the answer. Next is x factorial square is equal to 576. So this is equal to x factorial is equal to under root 576, taking square root on both sides. So x factorial is equal to 24, right? This implies x factorial is equal to 24 के क्या फैक्टर्स बनेंगे आपके? अभी हमने कई बार कर लिया हमने 4 into 3 into 2 into 1. So x factorial is equal to 4 factorial और x is equal to 4 आंसर आ गया, right? Now C part. C part is x factorial square minus 25x factorial plus 24.
So put x factorial is equal to y. So this implies y square minus 25y plus 24 is equal to 0. Now by splitting the middle term, you have to make the factors. You want addition to be minus 25 and product to be 24. तो क्या बनेंगे आपके? तो माइनस 25 का बनेगा माइनस 24 एंड माइनस 1. माइनस 24 प्लस माइनस 1 minus 25 minus 24 into minus 1 is equal to 24. So I can write this implies y square minus 24y minus 1y plus 24 is equal to 0. y कॉमन आ गया, y minus 24 plus 1 common minus 1 common. Write properly. This is minus 1 common y minus 24 is equal to 0. This implies y minus 24 into y minus 1 is equal to 0. This implies y minus 24 is equal to 0 or y minus 1 is equal to 0. अब y minus 24 कितना था? So this implies y minus 24 is equal to 0 implies y is equal to 24 or x factorial is equal to 24. अब x 24 का क्या बनता है? अभी हमने किया सम. x factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1. So x factorial is equal to 4 factorial, x is equal to 4. देखिए सेकेंड पार्ट है आपका y minus 1 is equal to 0 implies y is equal to 1. This implies x factorial is equal to 1. देखिए इसमें आपकी दो वैल्यूज आती हैं. This implies x is equal to 0, x is equal to 1 और x is equal to 0. But x is equal to 1 or x is equal to, this is y is equal to 1 implies x factorial is equal to 1, and this it means x is equal to 1 or x is equal to 0. But x is equal to 0 not possible. Why not? Can you tell? देखिए ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपका x 0 हो गया तो क्या बचेगा? ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आपका यहाँ पर आएगा, या फिर वैल्यू लगा लो x 0 है आपका, 0 फैक्टोरियल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, एंड दिस विल बी यस दिस इज पॉसिबल. तो बट x इज इक्वल टू 0 इट इज पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर वो ही आ रहा है. सो दिस विल बी x is equal to 0. So you are having two answers, three answers here, or x is equal to 0. So तीन answers हैं आपके. x is equal to 4. Answers are x is equal to 4. Answer x is equal to 4, 1 and 0. Right? Next is D part is x. देखिए आंसर में उसमें क्वेश्चन में भी था कि x has the value greater than or equal to 0. So it could be 0 also, right? X plus 2 factorial minus x plus 1 factorial upon x factorial is equal to, this is equal to 4y. Now 4y तो नहीं है ये. What is this? Let me check from the book. And this is equal to 49. रब हो गया थोड़ा सा. This is 49, right? Now when I will do this question, we will be doing, देखिए x factorial है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आपका x plus 2 factorial, this I can write
x plus 2 into x minus 1 into x factorial minus x plus 1 into x factorial. x plus 2 था, this is x plus 1. So upon x factorial is equal to 49. So यहाँ से हम x factorial कॉमन ले लो आप, तो क्या आएगा x plus 2 into x plus 1 minus x plus 1 is equal to 49 upon x factorial. कैंसिल. अब देखिए इसमें से फिर x plus 1 कॉमन ले लेंगे. x plus 1 कॉमन, then what is there? x plus 2 minus 1 is equal to 49. This implies x plus 1 into x plus 1 is equal to 49, or x plus 1 square is equal to 49. This implies x plus 1 is equal to अंडर रूट 49. देखिए जब हम अंडर रूट का आंसर लिखते हैं प्लस माइनस 7 करते हैं, माइनस 7 का भी स्क्वायर आपका 49 आएगा, प्लस का भी आएगा. तो x प्लस 1, दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 6, और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 7, x इज इक्वल टू माइनस 6. ये कैंसिल हो जाएगा. क्यों कैंसिल होगा? बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1. बिकॉज x is greater than 1. So answer is only one answer, x is equal to 6. This is answer, right? Only this answer. Now I am giving you few sums as a homework. Find 5 factorial plus 3 factorial. Second part is 6 factorial upon 4 factorial. Third part n plus 1 factorial upon n factorial. So next is 10 factorial upon 9 factorial plus 8 factorial plus 9 factorial upon 8 factorial plus 7 factorial and so on. You have to solve these questions and write the answers to me in the comment. I will tell you whether your questions are right or wrong. And if you are having any problem, then again you must tell me in the comment. I will discuss the chapter or those questions in the next exercise. देखिए वन थिंग मोर आई डू रिमेंबर नाउ कि आपकी जो मैंने कल एक्सरसाइज 5.1 की थी उसका क्वेश्चन नंबर 5, उसमें इवन नंबर्स हैं आपकी बुक में और मैंने उसमें इवन नहीं लिखा था. सो व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और उसमें आप इवन नंबर को यूनिट प्लेस पे फिक्स कर दोगे. ठीक है. सो आंसर विल बी लिटिल बिट चेंज एंड द मेथड विल आल्सो बी चेंज. नाउ so solve it and write answers in the comment. Do not forget to like, share the video and subscribe the channel to have more such videos. Thank you for watching.